So logistic regression is used for classifying the output, yes or no, to get yes or no as an answer. Linear regression, which we studied before, it will give you some variable output, okay? Continuous output. Like given the value of x, what is the value of y? Hmm? Or given some features of a flat, what is the price of the flat? So such kind of answers linear regression can give you. Hmm? But logistic regression is for getting yes or no as an answer. Okay. Yes, sir. And it is using this, the output is 0 or 1. Hypothesis is k is equal to w into x plus b. And s theta x is equal to sigmoid of k. Sigmoid function is defined like this. It's a mathematical function. So its output is always between 0 to 1. So sigmoid function, what it does is it always converts everything between 0 to 1. So it helps you to answer the questions easily. Just a second. Okay, so that is the funda of this logistic regression, that it gives you output as 0 or 1, either 0 or 1. So what is the difference between the binary logistic regression? Means it will give you yes or no as an answer, multinomial and ordinal. So more than two categories, without ordering or with ordering, like that. Okay. So these are the, Types of logistic regressions. yes. So the main purpose of logistic regression is for classification. It gives you classified output. That is the main thing there. Hmm? So now say you have a data set having 5 columns, namely user ID, gender, age, estimated salary, and purchased. Again, this comes under supervised learning. Supervised learning means we have some past data. Using that data, we are going to make the prediction. Supervised learning means what, we have data and we study that data. Using that data, we make we make a model and we predict the future values. Okay, so that is what it means. So let's say we have data like this.
user ID, gender, age, estimated salary, and purchased. So how many columns are there? 1, 2, 3, 4, 5 columns are there, right? High column. Yes, sir. Now, तो numpy आपने import किया, matplotlib import किया, pandas import किया, then data set आपको ये मिल जाएगा, ये नेट पे सर्च करें, नोट social network ads.csv, this file you will get on the internet. Okay. ये csv फाइल आप ढूंढो, मिलना चाहिए, उसको रीड करके डेटा सेट बनाया उसका, राइट, रीड csv करके pandas डेटा फ्रेम बनाया, राइट. So now what you have to do is you have to split the data, splitting our data set in dependent and independent variables. Okay. So in our data, we'll consider age and estimated salary as independent variables and purchase as dependent variable. So we can take any column as a dependent or independent, or it is mandatory to take that only. What we want to calculate is purchased, no? So that's why it is dependent. Okay. This is what we want predicted. The purchase thing, whether the person is going to purchase the house or car, whatever, depends on all these: user ID, gender, age, estimated salary, right? Okay. Okay. So they are independent variables, whereas purchased is a dependent variable. That is what we are interested in, the dependent variables. Like what will be the value of the dependent variable? Okay, so given the independent variables, what is the value of the dependent variable? So we are interested in that. Okay. Clear? So splitting our data set in dependent and independent variables. In our data set, we'll consider age and estimate salary as independent variable and purchase as dependent variable. So what we do here is we say x is equal to data set dot iloc x or x, now which are dependent and which are independent, that we want, right? Your x is the, so we are taking 2 and 3, right? 2 comma 3 means 2 3. Age and estimate salary is normally which will decide now whether the person will buy the car or not. Hmm? So what problem we are trying to solve here? Just a second. Whether person will buy a car or not. So gender is not going to affect anything, right? Age and estimate salary, that affects the decision making. So that's why we are taking that. Let's see. The column हो गया ना, this column means all the rows we want, this 2 comma 3 dot values. And your dependent is only number 4. All we want is a number 4 for dependent. So we segregated the two. So this is what we got. So X contains the age and the estimated salary, and Y contains zeros and ones like that, yes or no values. Hmm? Getting? Yes, sir.
becomes a NumPy array. Now splitting the data set into training set and test set. So whatever data you're having now, you have to use some of the data for training purpose and some data for testing purpose. So now we'll split our data set into training data and test data. Training data will be used to train our logistic model and test data will be used to validate our model. तो नॉर्मली क्या होता है कि 25% जो डेटा रहता है ना, जैसे 100 रिकॉर्ड्स है तो out of that 25 records you will keep for training purpose, sorry, testing purpose. 75% will be used for training the model. So what we are trying to do is we are trying to create a model. Using that model, then we can predict the future values. Getting? Yes, sir. So, so whatever data we are having, we are going to split it. So, so from sklearn model selection, import train test split, and see we create these sets: the X train, X test, Y train, Y test. Using this test size equal to 0.25, random state equal to 0. So what this will do is it is going to split the data. 75% will be used for training set and 25% will be used for testing purpose, basically. This is what happens here. Right? Yes, sir. तो समझ में आया, 25% आप टेस्टिंग के लिए रखोगे. And 75% for training, sir. Yes, हाँ, sir. ट्रेनिंग के लिए. ट्रेनिंग मतलब पास डेटा वो स्टडी करके मॉडल बनता है, क्योंकि उसको पास डेटा हाँ. का क्या रिजल्ट था उससे मॉडल क्रिएट करता है, तो इससे वो फ्यूचर वैल्यूज फिर प्रेडिक्ट कर पाएगा. So we want to check also, once the model is ready, we have to check whether the model is actually giving us the proper result or not. Hmm? So now we have some feature scaling also. तो एक्चुअली अभी इसको रिग्रेस करने के पहले थोड़ा सा इसको डेटा को लेवल करना पड़ता है, बिकॉज इफ यू सी दिस डेटा एज एंड सैलरी, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द टू. ओके, तो उसको थोड़ा वी हैव टू डू समथिंग कॉल्ड अ स्केलिंग. इट्स कॉल्ड अ फीचर स्केलिंग. तो किस तरह से करना है वो हमको देखना है. So now we'll do feature scaling to scale our data between 0 and 1 to get better accuracy. So that from sklearn dot pre-processing is the Hmm. uh, library inbuilt, or we have to build that lab. Is inbuilt. Okay. Sklearn is very popular library. Okay. ये so वहां से हम लोग लेंगे उसको. ठीक है ना. So now we will do scaling to scale our data between 0 and 1 to get better accuracy. Scaling is important feature because there's a huge difference between age and estimated salary. So we import standard scaler from sklearn.preprocessing, then make an instance, then fit, transform, xtrain and xtest. तो हमने यहाँ से ये इंपोर्ट किया स्टैंडर्ड स्केलर, उसका एक इंस्टेंस बनाया. Then we say xtrain is equal to scx.fit transform xtrain. So
एंड एक्स टेस्ट. सो दोनों एक्स के वैल्यूज को हमने ट्रांसफॉर्म किया, टेस्ट वैल्यूज एज वेल एज द ट्रेन वैल्यूज, राइट. वो करने से थोड़ा लेवल हो जाएंगे. मतलब एक, इट लुक्स लाइक दिस, सी एक्स ट्रेंड आपका ऐसा दिखेगा, एज एंड एस्टिमेट सैलरीज, एज एस्टिमेट सैलरी. तो इट हैज That डन सम salary काइंड is ऑफ. going in minus value. How it came? हाँ वही तो, उसमें ध्यान मत दो, उसने कोई स्केलिंग किया उसने, Okay. दैट्स फाइन. डेटा का एक थोड़ा अलग फॉर्मेट कर दिया उसने, ठीक है ना, जिससे प्रिडिक्शन प्रॉपर होगा. आफ्टर स्केल करने के बाद डेटा ऐसा दिखता है वो प्रोसेस करने के बाद. नाउ वी आर रेडी टू यूज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. तो we import logistic regression from this, then we create a classifier, and then we classify the x train y train. ये इसको यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रहा है, यहाँ पर this command will actually create the model. तो यहाँ पर मॉडल क्रिएट होगा, ठीक है ना. Random state equal to 0 to get the same result every time. रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 मतलब वो कंसिस्टेंटली सेम टाइप ऑफ रिजल्ट ही देगा, नहीं तो हमेशा कुछ चेंज होता रहेगा ना, इसलिए. So the classifier is ready now. Once the classifier is ready, then we can use this to predict the future values. So we say y predictive classify dot predict x test. ये text test data भी हमने उसको दिया, तो y उसने predict किया. तो y predicted y is this like this. ओके, जो हमने टेस्ट डेटा रिजर्व करके रखा था ना. हेलो. Yes, sir. तो मॉडल क्रिएट करने के बाद देन वी एक्चुअली यूज दिस टेस्ट डेटा एंड इट हैज प्रेडिक्टेड. इसने अभी प्रेडिक्ट किया 0 1 वैल्यूज दी हमको यहाँ पर. Yeah. अभी हमको चेक करना है कि एक्चुअल वाई टेस्ट और प्रेडिक्टेड वाई टेस्ट दोनों में क्या, कितना एक्यूरेटली उसने प्रेडिक्ट किया. वी वांट टू चेक दैट हाउ एक्यूरेटली इट हैज प्रेडिक्टेड. ओके, तो फॉर दैट पर्पस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. Confusion कंफ्यूजन matrix. मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है कि कंपेयर करता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. So what we do is we create one confusion matrix like this. CM is equal to confusion matrix y test comma y predicted. तो y test में तो एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए वो है, और y predict मतलब जो उसने प्रेडिक्ट किया, वो 25% जो था ना, उसका y test है और प्रेडिक्टेड वैल्यूज है. तो उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स इट इज गोइंग टू मेक नाउ. So when you do this, you will get a confusion matrix like this. CM 65 comma 3 8 comma 24. अभी ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझना जरूरी कि एग्जैक्टली होता क्या है कंफ्यूजन मैट्रिक्स. आउटपुट ऐसा आया ना इसका, CM एंड देन when you uh, when you check the value of CM you get it like this. So actually it looks just, let me see, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कर दिया है कि कहीं.
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में 4 वैल्यूज ऐसे आएंगे, ठीक है, 65, 3, 8, 25 ऐसा आ गया ना। एक्चुअली यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है कि 0, 0, ये 0, 0 मतलब 0, 0 प्लस 1, 1, 0, 0 मतलब कि एक्चुअल डेटा सेट, एक्चुअल आउटपुट भी 0 था, प्रेडिक्ट भी 0 किया। एंड CM11 मतलब एक्चुअल डेटा भी, एक्चुअल आउटपुट भी 1 था और प्रेडिक्ट भी 1 किया उसने। तो ये 65 + 24, तो इतना उसने प्रेडिक्शन करेक्ट किया है, राइट। दैट डिवाइड बाय टोटल कितने थे अपने पास, 100 पॉइंट्स थे। तो ये सब देखेंगे तो टोटल 100 दिख रहा है ना, टोटल 100 है, राइट, पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशंस। सो दैट गिव्स यू एक्यूरेसी। तो अपना मॉडल जो है 89% एक्यूरेट हो गया। ये समझा कि 0, 0 पोजीशन है ना, 0, 0। हेलो। हाँ सर, आई एम लिसनिंग। तो 0, 0 पोजीशन मतलब क्या कि एक्चुअल आउटपुट भी 0 था और प्रेडिक्ट भी उसने 0 किया। ऐसे 65 उसने बराबर प्रेडिक्ट किया, राइट। और यस। ये जो 24 मतलब ये 1, 1 है ना, तो एक्चुअल आउटपुट भी 1 था और प्रेडिक्शन भी उसने 1 किया। ओके। तो ये दो रिजल्ट प्रॉपर किया। बट ये वाला जो था ना 3 मतलब एक्चुअल 0 था बट उसने प्रेडिक्ट 1 किया, ठीक है। और ये यस वाला सर। एक्चुअल 1 था, उसने प्रेडिक्ट 0 किया। तो ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है। 8 और 3 ये जो प्रेडिक्शन उसने रॉन्ग किया। बट ये जो कॉर्नर है 65 and 24, प्रेडिक्शन वाज राइट। ओके। So you can say that this is like false positive, this is false negative. ये 8 + 3 ये इतने रॉन्ग प्रेडिक्शन किया। तो ओके। एक्यूरेसी फाइंड आउट करना, तो 65 + 24 डिवाइड बाय टोटल डेटा पॉइंट्स विच इज 100, सो 0.89 इतना एक्यूरेसी है इसका। तो जो हमारा मॉडल बना उसका एक्यूरेसी 89% नाइन आ गया। परसेंट ओके ओके। गॉट इट। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स मतलब ये होता है वो, समझ में? इट कंपेयर्स द एक्चुअल रिजल्ट विद द प्रेडिक्टेड रिजल्ट। गॉट इट। यस सर। Visualizing the training set results. अभी ये इसमें थोड़ा विजुलाइजेशन किया है। X set, Y set is X train, Y train. X1, X2 is NP dot start value, stop value, okay. NP arrange. X1 और X2 के वैल्यूज कैलकुलेट किए, देन दिस इज क्लासीफायर प्रेडिक्ट। ये वाला नहीं किया तो चलेगा, ये लास्ट पार्ट जो है ना, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स तक ही करना है, बाकी जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ सर। करेंगे अभी इसको। यस सर। कर CSV ले। फाइल आप ढूंढो नेट पे। हाँ वो देख, वो आता है, कर लेता हूँ मैं। ठीक, करो अभी, चलो। और सर इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ है जो सॉल्व करना होगा? नहीं नहीं, इसको ही करना है अभी, ये सब ओके। क्वेश्चंस नहीं रहेंगे अभी, पहले तो यही करना है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको समझ के करना है पहले। ओके चलेगा।
ठीक है ना, ये अलग टॉपिक है ना, ठीक है। Okay. ऑल राइट, गो अहेड, स्टॉप शेयरिंग नाउ। Okay. Sir, can I disconnect the meeting? या Okay. Thank you, sir. ओके।